Friends, thank you very much for being here at a short notice. This is actually in continuation of an announcement that we already made in the month of October with regard to the recapitalization of the public sector banks. At that time, we had announced that the PSBs would be recapitalized to the extent of rupees 2,12,000 crores. And thereafter, the Department of Financial Services has been undertaking a detailed exercise as to how much capital is to be inducted into the banks in the current financial year. If you recollect, we had later said that this would be spread over this year and perhaps the next year itself. I had already moved a supplementary grant in Parliament which gave you a clear indication of how much we were planning to induct into the banks this year itself. Now, the entire object of this exercise has been that the government has the prime responsibility of keeping the public sector banks in good health. We inherited a very major problem, and therefore we've been involved in finding a solution to that problem. The problem is of the past, and our role really is not only to find a solution but also to create an institutional mechanism to make sure that what happened in the past is not repeated itself. And therefore, as per the earlier announcement, the induction of the capital, the basis on which the banks are being chosen and how much is being inducted into which public sector banks, that is one part of the exercise. And the second part of the exercise is that the various steps to be taken in order to ensure that the governance of the banks follows the higher standards itself. The government has prepared a plan for this, and the Secretary, Department of Financial Services, Shri Rajiv Kumar, will give you a brief presentation. After this, if there are any questions, we'll be taking those questions from you. Thank you. Okay. So I'll repeat. Honorable Finance Minister, Finance Secretary Shri Hasmukh Adia, the Shri Subhash Garg, Secretary DA, friends from media. You may kindly recall that as mentioned by Honorable FM, that due to the transparent recognition of NPAs undertaking in the AQR in 2015, consequential increase in the provisioning, government announced that unprecedented recapitalization of 2.11 lakh crores. Since then,
economy has gained traction in terms of credit offtake, upgrade in ratings, including in ease of doing business, better corporate results, increase in market capitals of PSBs, and thus there are credible forecasts of increased economic growth, including by IMF recently at 7.4%. So India is a bright spot and seen as an investment destination. And you are aware that the bold reforms across the various sectors undertaken by government are constantly making transformational changes in line with the Honorable PM's maxim of minimum governance, and maximum governance. आज वर्ल्ड जब इंडिया की तरफ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है एज ए रिसर्जेंट एंड एस्पिरेशनल इंडिया, तो बैंकों को तैयार रहना है कि सरकार द्वारा बजट के माध्यम से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको सप्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटेलाइज करे, और इसी क्रम में ये पूरा प्रयास है. The flow presentation is like this, that I'll just briefly tell you what commitments we made, what is the approach to the recap, how would it be linked to reforms agenda, and how would we ensure that it is complied. Just a recall slide, ये just to establish the credibility and the विश्वसनीयता कि जो कहा गया था वो ये था कि सरकार फ्रंट लोड करेगी, डिफरेंशिएटेड अप्रोच अपनाएगी और परफॉर्मेंस ऑफ पोटेंशियल के बेसिस पर ही कैपिटल देगी, that so that it leads to a stronger and healthier banks for clean, prudent credit, and banks reorient themselves towards the MSME growth which generates employment. Now, let me upfront mention that इंडिया में 21 PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कुल मिला के पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का लगभग 70% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. Therefore, there is a need that they reposition themselves to support and sustain momentum to achieve the vision of Honorable Prime Minister of the New India. Each PSB is an article of faith, meaning thereby, if you know that प्रत्येक बैंक के साथ में दशकों की भावनाएं और विश्वास जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ रीजनल और उनका एक ज्योग्राफी से एक कनेक्ट है. उस कनेक्ट के बेसिस पर ईच पीएसबी इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ एंड गवर्नमेंट स्टैंड्स बिहाइंड ईच पीएसबी. इट्स कमिटमेंट इज फर्म एंड अनइक्विवोकल. इसी क्रम में जो डिपॉजिटर्स मनी है दैट इज सेफ and no PSB will fail because of the government commitment. Government owns maximum in this. सोशल मीडिया में PSBs को लेकर कुछ कुछ विषय चर्चा में रहते हैं, तो उसी के क्रम में ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आर्टिकल ऑफ फेथ है ईच PSB, दे विल रिमेन हेल्दी एंड दे विल बी मेंटेनिंग देयर रेगुलेटरी कैपिटल आवर. साथ में सरकार ने और भी बहुत से रिकॉग्निशन के लिए कार्रवाई की है, जिसमें जो बड़े डिफॉल्ट केसेस हैं, जैसे आपको ज्ञात है 12 केसेस जिसमें लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, वो एनसीएलटी को रेफर हो चुके हैं. विलफुल डिफॉल्टर्स को पार्टिसिपेशन से डिबार किया जा चुका है. सो ईच पीएसबी रिमेन्स रेडी एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ. दिस इज द ब्रॉड अप्रोच which is being envisaged for recap and reforms. Differentiation is on the basis of PCA and non-PCA. जैसा मैंने पहले कहा, each PSB is an article of faith. ये विश्वास का विषय है. Regulatory capital requirement of all PSBs is therefore being maintained. It is being ensured that investment and market raising from the non-PCA banks will essentially lead the growth. So differentiation is essentially PCA, non-PCA. Regulatory capital of everybody is maintained and reforms के अनुसार वो कार्य करें. इसका जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर है, जैसे अभी एफएम साहब ने बताया, वो पिलर है व्यापक सुधार और उनकी मॉनिटरिंग, रोबस्ट मॉनिटरिंग,
ताकि कैपिटल इन्फ्यूजन रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द रिफॉर्म्स. These are the reforms. 2 days का मंथन आफ्टर द पोस्ट अनाउंसमेंट हमने किया, जिसमें what we are saying is enhanced access and service excellence. इन ईज के माध्यम से 6 सेक्टर में ब्रॉडर रिफॉर्म्स हैं, जो रिफॉर्म्स बताने के बाद मैं नंबर पर आऊंगा. कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस, किस प्रकार से पीएसबीज रेस्पॉन्सिव हों और फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम they provide the services to the citizens and also to the senior citizens and Divyang, and I'll come to this. Responsible banking, they learn from the past and prepare for the future. This is what I'll explain each slide. Credit offtake में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, क्लीन हो और उसमें कोई भी प्रूडेंशियल इम्प्रूडेंट एक्शन ना हो. बैंकों को किस प्रकार से एमएसएमई के मित्र के रूप में एस्टेब्लिश करें, दिस इज द स्लाइड. और जो एरियाज अंडर सर्व्ड हैं या जो लोग अंडर सर्व्ड हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन को किस प्रकार से पीएसबीज फर्दर डिपेंड करें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बाय सेइंग इज नॉट एनफ, हाउ डू वी एंश्योर दैट दिस हैपेंस. रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, एक्सीलरेटेड ग्रोथ और रोजगार के लिए आवश्यक है कि पीएसबीज रेस्पॉन्सिबली लोन दें, जिसके लिए प्री एंड पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म्स अति आवश्यक हैं, और ताकि उद्यमी को भी टाइमली सपोर्ट मिले और एनपीएस भी ना हो. आपको ज्ञात है जो फर्स्ट पॉइंट है, मिनिमम, इफ आई कैन शो इट हियर, जेएलएफ में आप जानते हैं जॉइंट लैंडिंग फोरम में एज मच एज देयर वर 20, 21, 22 लैंडर्स, और इसका परिणाम ये था कि कंसोर्टियम में निर्णय लेने में देर होती थी, उद्यमी को परेशानी होती थी, और दूसरी तरफ कभी कभी उद्यमी भी इसका अनावश्यक लाभ उठाते थे. सो दिस इज बीइंग प्रपोज्ड दैट देयर वुड बी अ मिनिमम 10% एक्सपोजर ऑफ ईच बैंक, thereby essentially there would be only 6 to 7 lenders in the big corporate loans. इसी तरह से so essentially no piggy riding by others on the lead banks. The clean corporate loans, post sanction and pre sanction, these are in 2 categories. The cash flows are ring fenced. It had happened in the past that because of these large consortiums, उद्यमियों ने एक बैंक में कैश और एक बैंक में लोन रखा ताकि दोनों एक दूसरे को नहीं. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड इज दैट विल रिंग फेंस द कैश फ्लोज, दे विल बी ऑल कनेक्टेड एंड अक्रॉस द डाटा पॉइंट्स द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड. सिमिलरली बहुत से केसेस में द नेक्स्ट इज द पोस्ट सैंक्शन, ऑल लोन्स अबव ₹250 crore विल अंडरगो ए स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग, जिसमें खास तौर से लोन के प्री सैंक्शन के समय जितने भी कोविनेंट्स थे, कोविनेंट्स यानी लैंड समय पर आ जाएगी, इक्विटी समय पर आ जाएगी, उसमें से किसी का भी ब्रीच होगा, सो दैट वुड बी रेड फ्लैग्ड एंड शेयर्ड अक्रॉस द कंसोर्टियम्स. दिस विल ग्रेटली मिनिमाइज द रिस्क्स एंड ऑल्सो वुड अवॉइड एनीथिंग हैपनिंग, I mean timely action against all of this. Similarly, there would be a separate stress asset management vertical in each of the PSVs. That means जो existing NPAs या stress assets हैं, they will be transferred to one particular vertical for cleaner and for timely वसूली. The other parts of the responsible banking further includes that each bank adopts a policy as per the core strength. The PSB board approved core strength areas they identify, and the non-core assets, you would be aware that banks कालांतर में बहुत सारी non-core activities में enter किए. ये non-core assets सभी banks identify करेंगे. They have already identified large number of non-core assets which will be monetized. The process is already started. जैसे for instance PNB has already
already monetized its housing, the real estate and many other things which are being monetized. इसी प्रकार से समय समय पर बहुत सारे बैंक्स ने अपने बहुत सारे ओवरसीज ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए. इसके भी बैंक्स को रेशनलाइज करने की आवश्यकता है और एज आई अंडरस्टैंड वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस ऑलरेडी. और जो अभी तक की जानकारी है उसके हिसाब से बैंक स्वतः अपने अपने करीब 41 ऑपरेशंस को रेशनलाइज करने का निर्णय ले रहे हैं. सारांश में विषय यही है कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी में रहें. इट इज नॉट दैट एवरीबडी डज एवरीथिंग. पीएसबी एज उद्यमी मित्र, जो लघु उद्योग है वो रिकैपिटलाइजेशन रिफॉर्म्स एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी बैंक छोटे कारोबारियों को मित्र के रूप में अपने आप को रीओरिएंट करें, एस्टेब्लिश करें. उद्यमी मित्र वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च हो गई है जिसपे कार्रवाई शुरू हो चुकी है. 15 दिन के अंदर बैंक्स उस पर निर्णय लें और कॉम्पिटिटिव तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को भी जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर दें. Analytics across all the data points for the help of MSME is one of the major area of the reforms. यानी उनके कैश फ्लोस को बढ़ाने के लिए ट्रेड्स और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए जेम. आप इसमें जस्ट ए ब्रीफ think there are around 65 crores BSBD accounts, basic savings and banking deposit accounts, जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस लागू नहीं है. तो जितने भी, और ये मुख्यतः सारे के सारे अकाउंट्स फर्स्ट जनरेशन अकाउंट्स हैं. यानी जो भी फर्स्ट जनरेशन 65 करोड़ अकाउंट्स हैं उन पर कोई मिनिमम चार्जेज या कोई चीज लागू नहीं है. सोशल मीडिया में अन्यथा खबरें आती रहती हैं कि इस प्रकार से चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, सर्विसेज लगेंगी, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल एंड 65 करोड़ थिंग्स अकाउंट्स आर ऑल आउट. एटीएम और डेबिट कार्ड, डिजिटाइज बैंकिंग, ये भी रूमर्स आती रहती हैं. कस्टमर की गलती के बिना अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो अनऑथराइज्ड या फ्रॉडुलेंट, उसका पैसा कस्टमर को 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में वापस मिलेगा. ऐसा सर्कुलर एग्जिस्टिंग है. सो देयर इज नो वे, देयर इज नो रूम फॉर एनी रूमर दैट एनीथिंग हैपनिंग टू एनीबडीज अकाउंट ऑन आइदर एन एटीएम और डीबीटी और ए डिजिटाइज्ड ट्रांजैक्शन. इट इज रिफंडेड बैक. ही हैज जीरो लायबिलिटी. माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के मिशन के तहत पीएसबी रिफॉर्म्स का ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसमें 5 kilometers of every village. What we are doing is that it's also a part of the reform that all branches, all BCs are mapped now on a GIS based platform. Meaning thereby कि आप एक इस ऐप के माध्यम से ये हम डेवलप कर रहे हैं, कोई भी बैंक, कोई भी उद्यमी मित्र की आप सुविधा को घर बैठकर लोकेट कर सकते हैं. एंड इन एवरी 5 किलोमीटर विच इज द मोस्ट इंटीरियर एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, वहां पर ये सुविधा उपलब्ध हो. फॉर विच आई मस्ट रिपीट दैट फॉर दीज काइंड ऑफ इनएक्सेसिबल एरियाज PSBs आर वेरी वेरी वेल suited and therefore they would further the deepening of the financial inclusion. Customer responsiveness is another major area of reform in which is also tuned to the emphasis of the Honorable Prime Minister on ease of living. जो ease of living के उद्देश्य की पूर्ति के लिए what every bank is supposed to do is to promote the apps and the digital banking from the comfort of the home. आपको अकाउंट खोलना है, नॉमिनेशन करना है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, account plus services like insurance and investments, maximum form of 2 pages, these are all for the ease. And then doorstep banking for senior citizens and Divyangjan, this is what is the citizen and friendly things. Another thing which the banks are in the process of doing is they provide clean ambience and clean toilets in all the 125 lakh branches. This process is also on as a part of the customer friendly thing. So now coming to the numbers after the reforms,
we are front loading the recap as announced, which are of course dependent on reforms, and this is for the current year. It's more than 1 lakh crore, post announcement again. 8139 crores is what has come from the budget, 80,000 crores are the recap bonds, and market trading has already taken place to the tune of 10,312 crores, and it is plus in the current year. So, much more than what has been promised, that it is front loading. And I must repeat here that all this is dependent on PSB's commitment to reforms and improve governance. I'll explain it how. This is what is the bank-wise numbers. These are for non-PCA banks, these are for PCA banks. This side ensures that every bank is sufficiently, regulatory capital is taken care of. Sure. We'll be uploading it on the website also. This takes care of all the regulatory requirement of all the banks. Therefore, there is no issue of the maintaining the capital adequacy. This is what is taking care of the growth. So, the differentiation is very clear. The growth is also inbuilt into this. And I must mention that all the other, as you are aware that because of the increased NPAs and provisionings, the next 1 or 2 quarters might impact the results, but it doesn't matter. This factors in the requirements and also the growth requirements. And broadly, it also factors in the regulatory and other requirements which might come with the introduction of Ind AS. If Ind AS की introduction होती है तो उसके भी provisions, उसके भी requirements इस calculations में factored in है. Now, what does this do? This enables the additional credit offtake capacity of PSBs by conservatively by more than rupees 5 lakh crores. The growth capital is so much that जब country की economy एक upsurge पर है, उसको leverage करने के लिए, उसको support करने के लिए, उसको catalyze करने के लिए banks are now sufficiently capitalized to maintain their regulatory capital and also to lead the growth, also to do financial inclusion in the far-flung areas and be friendly to the MSME. Now, how do we ensure the compliance? ये सब कहने से compliance में क्या-क्या करना आवश्यक है? So I must first repeat the announcement made earlier by the Honorable Prime Minister that government बैंकों के किसी भी commercial decision में interfere नहीं करेगी किसी भी level से. So they are independent. However, they have to subject themselves to the reforms and do the prudent and clean lending. Secondly, the strengthening and empowerment and professionalization of the bank boards, which is high again on the agenda of the government. इस प्रकार bank boards का empowerment, whole-time directors की responsibility for all the reforms, each reform is to be assigned to one whole-time director, and the boards have to review it quarterly. हर क्वार्टर में जो reforms की क्या progress है, एक independent director को मिलेगी assigned, and then they have to review this. So, this is the board-approved vision and the emphasis on improving the governance in the banks, which is the high agenda. Now, what happens to this? How do we convey to you that what we promised, उस पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, या ये खाली credibility की बात है, विश्वसनीयता की बात है, तो ये इस पर हुआ या नहीं हुआ? So government has also planned that we'll give a report card on compliance. We'll do an annual ease in tax survey. Ease, as I mentioned in the beginning, forms part, six reforms form part of it. Banks would be ranked on each of the ease parameter. One survey will be conducted annually by an independent reputed agency, and survey results would be made public. इससे समस्त reforms का एक book, समस्त reforms पर क्या each bank का परफॉर्मेंस है, इससे एक प्रतिस्पर्धा भी
पैदा होती है और एक रिवॉर्ड भी पैदा होता है जिसको कि करना है, और एक रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। समस्त रिफॉर्म्स की एक बुकलेट भी तैयार की गई है जो भी आपके लिए उपलब्ध है। So what is it going to result? Clean and commercial prudent business, whole lot of growth capital there to kick-start the economy, to increase, to support the private investment, banks with full financial stability and improved governance, value for stakeholders, all citizens, it's inbuilt, and it's highly technology driven, smart banking, so that you slowly continue to provide, slowly move towards providing services online and from the comfort of the home. Thank you very much. Thank you, Mr. Rajiv Kumar, Secretary DFS. We'll be distributing a press release after the press conference. You may contact Mr. Malik, and we'll also be uploading this on the website. Now we'll take questions. We'll come to all of you one by one. Yes. You can answer most of these questions. My first question, you're announcing a very stringent criteria for loan disbursements and consortium lending. While it is good and it is the need of the hour, many businesses may just fear that this is going to increase their compliance time and their time to get the loans. Do you think it may, I mean, you know, while it is good, it may also be some sort of a stumbling block? How will we ensure that the businesses are also able to get loans in time, which will also help our credit offtake? It is, the booklet of the entire reforms is being distributed to everybody. Please take a copy. This will actually facilitate. If you have to approach 15, 16, 17, 18 lenders in one consortium, it is much easier to negotiate with 6, 7. It is to actually encourage the clean business. And then everything is going to be technology driven. One is also providing in the booklet, you'll see that the tracking of the applications end to end, that is also part of it. So it would substantially ease for clean business. If one is looking for the 10, 12 and then playing against each other, it's a different matter. Yeah, Sapna.